So we are talking on preventive health in youth. That's a real challenge for all of us because we see a lot of our young people below the age of 40 are falling victim to heart attacks. So what we should do to attack the heart attack is the main agenda. And before that, what we should do is enhancing awareness, for which I am very grateful to Sudeep Srivastava for taking a lead. I personally feel that heart attack is first born in the mind, then it manifests in the body, and then it goes to the heart. How it happens, we'll discuss in the next 30 minutes or so. Believing in prolonging lives and enhancing longevity and escaping premature death is my main motto of being a doctor. Preventive cardiology is the only solution for India. I am not against intervention. I had very extensive training in cardiology from the United States, but I firmly believe that preventive cardiology is a huge ocean, but we have never tapped this ocean. In India, we can't afford interventional cardiology. We can postpone the need of interventional cardiology. That's what we should do. A time has come that we must have a paradigm shift from heart illness to heart wellness, focusing on visceral fat reduction. That is a very important understanding. My first work, which was published in Indian Heart Journal in 2007, first time from India to the world on visceral fat. The people who have a lot of visceral fat, they are more prone to get premature heart problems, brain attack, heart attack, leg attack, eye attack, liver and nose attack. When I talk about visceral fat, means what is within us, not a subcutaneous fat. Visceral means inside the organs, like around the heart, around the liver, what we call as fatty liver, fatty kidney, fatty intestine, fatty stomach, fatty eyes. These days when we do a fundus, we see a fat deposit there, and fatty blood vessels. We have about 60,000 miles of blood vessels in this, functioning all the time, and 6 billion capillaries in us. छोटी-छोटी नाड़ियाँ होती हैं, capillaries, where the blood is flowing like a stream. So health of blood vessels is very important. We have 60 trillion cells in our body, and there are 6 trillion chemical reactions with 60 neuropeptides. Everything is happening in accordance with the law of nature in you and me. We have to optimize this homeostasis. अगर optimize करेंगे तो हम healthy होंगे, और अगर fat ही fat भरा होगा तो सब चीज obstruction हो जाएगा, and we cannot have health. So that is my main agenda. How to reduce visceral fat is the main agenda, to highlight the burden which Swadeep had just mentioned: hypertension, heart attacks, metabolic syndrome or obesity, diabetes and heart failure, what to recommend in preventive strategies, how to diagnose them, how to screen them. Screening is very important, and how we can prognosticate and enhance the prevention modalities at a primordial level, primary level, secondary level and tertiary level. And to highlight the power and promise of lifestyle. हम लोग की lifestyle अच्छी जब होती है, I go to Lodi Garden for last 42 years now, and I see a lot of people coming to Lodi Garden only after getting angioplasty. They have no idea where to go for a walk. Very pathetic. They have devices fitted in, pacemaker लगे हुए हैं, फिर concept करें walk. I met one lady, she had a cancer of the ovary, and she is told to go for a walk. It may help her. It's too late. तो ये शुरू से होना चाहिए. कहते हैं primordial, before the disease is born and before the risk factors are born. So we have to understand that lifestyle should start from the womb. The baby moves in the mother's womb. And when the baby is born, he should continue doing exercises and motion throughout life so that he remains healthy. And then we should have some method of screening it. कि सब ठीक चल रहा है कि नहीं, तो स्क्रीनिंग मशीन होना चाहिए. उसी से मालूम पड़ेगा कि हमारा मेटाबॉलिज्म ठीक है कि नहीं. When we say metabolism means body mass index एक चीज है,
बॉडी मास कंटेंट दूसरी चीज़ है। हम देखते हैं फैट कितना है, कार्बोहाइड्रेट कितना है, शुगर कितना है, और फैट के कई मिनरल्स होते हैं, मिनरल्स कितने हैं, बीपी कितना है, पल्स कितना है, सैचुरेशन कितना है। मोर देन 20 पैरामीटर्स आर मेजर्ड बाय सो कॉल्ड इंडिया हेल्थ लिंक एच पॉड। का नाम है एच पॉड, हेल्थ पॉड। पॉड का मतलब आप सब समझते होंगे, सब चीज़ पैक्ड है पैकेट में, रैप आपके लिए इंस्टेंटेनियस रिपोर्ट इन 4 मिनट्स और 5 मिनट्स। इससे बड़ी चीज़ क्या होगी? हम चाहते हैं अमेरिका में जाते हैं तो वहाँ करते हैं कियोस्क फॉर ब्लड प्रेशर। यू गो एनीवेयर फॉर शॉपिंग, यू जस्ट पुट योर हैंड, यू कैन गेट अ स्लिप, योर बीपी सो मच। इंडिया में नहीं है, वेइंग मशीन है। हम जाते हैं रेलवे स्टेशन में, वेइंग मशीन होती है, यू पुट सम कॉइन एंड यू गेट योर वेट। उसके बाद में क्या, कुछ अवेयरनेस नहीं है। तो वो होना चाहिए। हाइपरटेंशन का प्रेवलेंस आप सबको पता होगा 35 to 40%। अगर हमारी पॉपुलेशन एडल्ट की 80 करोड़ है तो सोचिए 80 करोड़ में से 40% लोग तो बिजी, सबको हाइपरटेंशन। इट्स वेरी अलार्मिंग फिगर। हार्ट प्रॉब्लम्स 14 to 15%। ओबेसिटी, दिस इज माय ओन वर्क जो मैंने 2007 में किया था, कि 60 to 70% लोगों को पॉट बेली है, जिसे हम हिंदी में कहते हैं तोंद। I say longer the waistline, shorter the heart line. जितनी बंदी तोंद, जितनी बड़ी तोंद, उतनी छोटी जिंदगी होगी आपकी। तो उसकी जानकारी सबको जानना चाहिए कि हमें पॉट बेली नहीं होना चाहिए। ये क्योंकि ऑब्वियस फैट है तो आपको इसकी जानकारी देगा। एज ए डॉक्टर हम समझते हैं कि हार्ट के आसपास क्या फैट होता है, सब कहते हैं एपिकार्डियल फैट, फिर हम कहते हैं पेरीनेफ्रिक फैट, फिर हम कहते हैं पेरीहेपेटिक फैट। उसकी ज़्यादा बात कर ही रहे। ये क्योंकि ऑब्वियस है, तो आई पब्लिश द फर्स्ट पेपर इन द वर्ल्ड दैट पॉट बेली इज द मोस्ट पावरफुल एंड प्रॉमिसिंग प्रेडिक्टर ऑफ प्रीमैच्योर हार्ट प्रॉब्लम। फिर उसके बाद में हम देखते हैं हार्ट अटैक। सुदीप ने अभी कहा कि यंग लोगों को हार्ट अटैक हो रहा है। दिस डेटा वाज पब्लिश जस्ट फ्यू डेज बैक फ्रॉम WHO, ICMR एंड मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ कि 10 से 15% लोगों को हार्ट अटैक 40 साल से पहले की उम्र में हो रहा है। अभी तो उनकी स्टडी भी कंप्लीट नहीं हुई है एंड दे फॉल विक्टिम टू हार्ट अटैक। व्हाट ए बिग लॉस, नॉट ओनली फॉर ए फैमिली बट फॉर ए कम्युनिटी, फॉर ए नेशन एंड द वर्ल्ड एज ए होल। सो अवेयरनेस इज द नीड ऑफ द आवर। 50% of people die at home before getting a medical help for the heart attack. Very painful. 50% of heart related deaths are less than 50 years of age. ये डेटा मेरा नहीं है. This data is from ICMR, WHO and Ministry of Health. Just few days ago I got it. Preventive cardiology and heart wellness mantra is the only solution at primordial, primary, secondary and tertiary level. इसको सिंप्लीफाई करता हूँ मैं कि इसकी जानकारी बच्चों को होना चाहिए स्कूल में, कॉलेज में, कॉर्पोरेट्स में, हर गवर्नमेंट ऑफिस में, नॉन गवर्नमेंट ऑफिस में, and everybody should take it like a big project from CSR. पैसे की क्या कमी है? मुझे कल बॉम्बे से फोन आया एक फार्मास्यूटिकल कंपनी से कि हमको कुछ कम्युनिटी सर्विस प्रोजेक्ट करना है। तो हमने कहा ये करो यार, इंडिया हेल्थ लेवल से बात करो। They have money but they don't know how to spend, where to spend and what way they should spend. So I think health of India is very very important. स्वास्थ्य भारत जब भी होगा तो हम सब स्वस्थ होंगे। तो अगर हम स्वास्थ्य नहीं है तो स्वास्थ्य भारत का ड्रीम है। Our Prime Minister Modi Sahab has told many times that India is famous as the world capital of hypertension, world capital of diabetes, world capital of heart attacks, world capital of pot belly, and world capital of heart failure. But now the time has come, we should call India as a world capital of wellness. That's how we start promoting yoga. I express my gratitude for it. He is the first man in the India who is promoting yoga. And the whole world is following. तो हम चाहते हैं कि वेलनेस को हम यहीं से क्रिएट करें और पूरा वर्ल्ड फॉलो करें। वी मस्ट क्रिएट एन इम्पैक्ट बाय द हेल्प ऑफ इंडिया हेल्प लिंक टू टेक दिस मैसेज और मंत्र ऑफ वेलनेस ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये डेटा है, मैं आपको बता रहा हूँ कि हाइपरटेंशन इज ए साइलेंट किलर। आई कॉल दिस एज ए ग्लोबल सुनामी। इट मे कॉज हार्ट अटैक एंड ऑल काइंड ऑफ अटैक्स। और हाइपरटेंशन का जो कंट्रोल है वो सिर्फ 10% है। Very painful.
This data is again from ICMR, Ministry of Health, Government of India, 2022, few days back. 90% people are uncontrolled hypertension. That's how they get complication. So here is a machine which will give you instantaneous report on your blood pressure control. And you can do repeated studies. तो इसी कारण इसके नीड बहुत ज़रूरी है और हम देखते हैं कि प्रिवलेंस ऑफ हाइपरटेंशन की जो अवेयरनेस है कि उनको हाइपरटेंशन है पेशेंट को 42% जानते ही नहीं कि उनको हाई ब्लड प्रेशर एंड दे कम टू अस विद अ ब्रेन हेमरेज और अ मैसिव हार्ट अटैक सो अवेयरनेस इज द नीड ऑफ द आवर दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट हाइपरटेंशन इन यूथ ये 12 चीज़ें याद होनी चाहिए नंबर 1 12 S है salt consumption should be banned extra you should not go beyond 3.4 to 4 grams number 2 saturated fat ये जो तली चीज़ें खाते हैं पकोड़े समोसे हलवे मिठाइयाँ इसका कंजम्पशन बहुत ही लिमिटेड होना चाहिए ना के बराबर दैट इज द रियल कॉज फिर होता है शुगर वाइट शुगर इज लाइक ए पॉइजन यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल sedentary lifestyle all the time you should not move use your body or lose your body move your body or lose your body हर घंटे बाद हमें चलना चाहिए चाहे जहाँ भी I'm a doctor I'm standing all the time but still I go to Lodi Garden for a walk just now our colleague sitting here from Statesman he was telling कि यार मैं तो चलता हूँ आधा घंटा वो चाल नहीं हम काम करते हैं गार्डन में जाइए and be with the nature so you understand that I am not in stress most of the time when I go to Lodi Garden, I see a lot of people come from media. But when they come in the morning walk, they talk of evening meeting. And when they go in the evening meeting, they talk about morning walk. So वहाँ कहाँ है? We should have present moment awareness. कि थोड़ा birds को देखें, flowers को देखें, nature को देखें और nature के साथ मिल जाए. Then we are going to be healthy. But unfortunately, we are not there. We are somewhere else mentally and somewhere else physically. Then comes smoking. We should totally ban smoking, tobacco in any form. I always say, today you chew tobacco, tomorrow tobacco will chew you. Today you smoke a cigarette, tomorrow cigarette will smoke you. Choice is yours. So I think this is a slow motion suicide and a slow motion poison or homicide, whatever you call it. Stress, stubborn obesity. Stubborn obesity means हम मोटे हैं, उसके बाद चॉकलेट खाए जा रहे हैं. कंपल्सिव ईटिंग व्हाट यू कॉल इट हमको सेटिस्फैक्शन नहीं है हम पिज़्ज़ा खाए जाते हैं हमें कंपल्सिव ईटिंग उसे कहते हैं स्टबर्न ओबेसिटी सरप्लस अल्कोहल पीपल टेक लॉट ऑफ अल्कोहल दे फ्लक्चुएशन देयर इज सीजनल वेरिएशन एंड एंगर अर्ली डायग्नोसिस इज द नीड ऑफ द आवर दिस इज द डेटा फ्रॉम द वर्ल्ड व्हिच वाज सेइंग इंडिया इज द सिटिंग ऑन अ वोल्केनो सो फार एज मेटाबॉलिक सिंड्रोम इज कंसर्न्ड हम एक वॉल्केनो पे हैं और हाइपरटेंशन का प्रेवलेंस यहाँ भी रिकॉर्डेड है लेटेस्ट 33 to 40%. रूरल एरियाज में कम है बिकॉज दे फॉलो द लॉज ऑफ नेचर दे आर नॉट स्ट्रेस्ड लाइक यू एंड मी वी शुड लर्न हाउ टू कोप विद द स्ट्रेस स्ट्रेस तो बहुत जरूरी है डॉक्टर गोयल आया ऑल द वे फ्रॉम यूएसए तो स्ट्रेस लेके आया वो बट ही नोज हाउ टू मैनेज स्ट्रेस Sudeep is here he called me 3 times last night because he wanted everything should go very smoothly in the morning he called me 2-3 times he wanted everything should go smoothly अगर हम स्ट्रेस को मैनेज करने अच्छी तरह कोप कर लें तो वी आर गोइंग टू हैव यूज स्ट्रेस एंड नॉट डिस्ट्रेस इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दिस इज जस्ट टू शो द सिनेरियो इन इंडिया कि सिस्टोलिक हाइपरटेंशन ऊपर का जो ब्लड प्रेशर है इंडियन में ज़्यादा होता है सी द डेटा दिस इज द डेटा वी पब्लिश इन बुक आई पब्लिश अबाउट 14 बुक्स टेक्स्ट बुक्स इन कार्डियोलॉजी जो हमारी पुरानी बुक है पिछला लास्ट ईयर उसमें हमने बताया है कि 3 times higher the blood pressure is going to be in Indians by the year 2040. Hypertension का जो इंसिडेंस है वो डायबिटीज से 3 गुना ज़्यादा है इतना पावरफुल है और हम मशीन से पढ़ सकते हैं ट्रीट कर सकते हैं कॉम्प्लिकेशन बचा सकते हैं इंसान को हेल्दी रख सकते हैं व्हाट एल्स वी डू दिस इज द डेटा वी शो इंडिया इन द टॉप सी हियर द डेटा लीडिंग रिस्क फैक्टर फॉर हाई मोर्टेलिटी वर्ल्ड वाइड इज हाई ब्लड प्रेशर सी द डेटा हियर लीडिंग ग्लोबल रिस्क फैक्टर इज हाई ब्लड प्रेशर अब हार्ट अटैक का बर्डन देखिए आप इज 10 times हायर इन इंडियंस यंगर इंडियंस में हार्ट अटैक की क्षमता 10 गुना ज़्यादा है 10 से 15% लोगों को हार्ट अटैक होता है और मेटाबॉलिक सिंड्रोम देखिए आप
65% of people have a metabolic syndrome in India, mostly in Punjab, in Delhi and in Kerala. अभी मैं डेटा दिखाता हूँ आपको, and mortality rate सब जगह कम हो रही है, चाहे वो अमेरिका में हो, फिनलैंड में हो, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूएसए में, इंडिया में बढ़ती जा रही है। वहाँ अवेयरनेस बहुत है। It is without media we are incomplete. So media has to sensitize. Without media we will totally fail in all our attempts. The last line is very important. कि heart attacks is mortality 50% Indian में हो रही है for less than 50 years. I think we all should live at least till the age of 80. None of us should have any problem till the age of 80. अगर इसके पहले कुछ problem होती है तो we have gone wrong somewhere. This is the data which I am showing. See India data here. Whole India is full of metabolic syndrome. See in the world also, our India is in the red. We can see here. And see here the data. 62% of estimated persons of death on by metabolic syndrome or non-communicable disease. इसमें देखिए premature death 53% by non-communicable disease. This is WHO. This is not my data. Data by World Health Organization. और ये data देखिए projection of 2030. 70% of Indians will fall victim to early mortality because of heart attacks. 2 out of 3 deaths are because of non-communicable diseases worldwide. 50% of all deaths are between the age of 30 to 60 years of age because of premature CAD, because of metabolic syndrome, visceral fat. तो ये visceral fat को कम कैसे किया जाए वो हमारा मेन एजेंडा है। ये देखिए हमारा डेटा जो पब्लिश किया हमने, इंडिया इज ऑन द टॉप फॉर मेटाबॉलिक सिंड्रोम। सी द डेटा ऑफ हार्ट अटैक्स 14%, 14% हमारी जो पॉपुलेशन है, एडल्ट पॉपुलेशन, उनको हार्ट अटैक हो जाता है, चाहे मैन हो चाहे वुमेन हो। दे आल्सो कम्पीट, इवन women also competing now. In the olden days we were saying no, women are immune till 45 years of age because their hormones are protective. These days they also smoke, they don't exercise, they also have a lot of stress, they are also working, so they are also competing for a heart attack. And see the data, from 1960 to 2022, rising. Mortality is also 16 to 20%. Angioplasty हुई, bypass surgery हुई, उससे mortality कम नहीं हुई। It is a panacea, I agree, but in acute emergency. हम चाहते हैं 80 साल तक किसी आदमी को या औरत को नौबत ना आए कि उसे एंजियोप्लास्टी करानी है, स्टेंट कराना। And see the data to show metabolic syndrome is a major risk factor. Visceral fat is a real factor. अगर हम इंडियन हैं तो हमारी रिस्क वैसे ही बहुत ज़्यादा है जेनेटिकली, क्योंकि 10 साल पहले हमें हार्ट अटैक होता है और डिजीज हमारी एक्सटेंसिव होती है, 3 वेसल होती है, 4 डिस्टल रन ऑफ, और मेटाबॉलिक सिंड्रोम बहुत ज़्यादा है और एमर्जिंग फैक्टर भी इंडियन में ज़्यादा है। हमारे प्लाक रप्चर हो जाते हैं और हार्ड हो जाते हैं, उससे लोगों को हार्ट अटैक हो जाता है। अभी जो केके की बात आप सब लोगों के मन में होगी, जो कोलकाता वाले हैं, he had a concert, after concert he was tired, he was fatigued, he went and then he did not get up. It is sudden death for sleeping, there is no time, because जो हमारे प्लाक होते हैं कोरोनरी आर्टरी में, अगर वो डिसेक्ट कर जाए, रप्चर कर जाए, तो वहाँ क्लॉट बन जाता है और एकदम इरेगुलर हार्ट होता है, डेथ हो जाती है। ये पेन भी नहीं होता उसके अंदर। So you have to be very, very careful कि कैसे, how we have seen our Saurav Ganguly heart attack at the age of 46. This fellow who is the Romeo D'Souza, who was the great guy, he also had heart attack at 46. Kapil Dev at the age of 61, 62. ये तो सब लोग को जानते हैं आप, जो गुना बता रहे हैं आपको। Sports people they die, or Australian top cricketer sudden death. So I think these are all happening and it's a matter of great concern. So we have to start thinking very seriously by the motion and movement created by Sudeep and by Dr. Goyal, and I'm sure Dr. Rawat is also part of it. This is a real movement and I'm very happy to participate with them. STEMI, heart attack देखिए, हार्ट अटैक का प्रिविलेज 30 लाख लोगों को हार्ट अटैक होता है हर साल भारत में। दिल्ली में हार्ट अटैक की हालत क्या है ये देखिए आप, दिल्ली में हार्ट अटैक 1 in 15 minutes, हर 15 मिनट 1 मिनट खत्म हुआ 4 लोगों की डेथ हो गई, ये हार्ट अटैक हो गया लोगों को। और देखिए 100 पर डे, 3000 पर मंथ, 36,000 हार्ट अटैक्स एवरी ईयर इन दिल्ली अलोन। कितने दुख की बात है।
how to attack heart attack is the main agenda for which I've joined this movement with all the three of them, Dr. Goel, Sudeep and Dr. Rao. And we can see here, mission attack, heart attack should be our agenda. See the data here, कि कैसे हार्ट अटैक होता है, किस टाइप का होता है और क्या क्या सिविरिटी होती है उसकी। और उसके बाद में है मेटाबॉलिक सिंड्रोम, जो हमारा सबसे ज़्यादा काम हमने किया है पूरे वर्ल्ड में, इज अ मेटाबॉलिक सिंड्रोम। आप पंजाब में देखिए, केरला में देखिए, गोवा में देखिए, तमिलनाडु में देखिए। फिर देखिए आप मेटाबॉलिक सिंड्रोम सेंट्रल में, सेंट्रल ओबेसिटी, जिसकी मैंने बात करी थी तोंद के बारे में। सबसे ज़्यादा तोंद होती है, सबसे ज़्यादा रिस्क। तो मैं आप सबसे एज ए मीडिया पर्सन ऑल्सो एडवाइज यू कि नन ऑफ अस शुड हैव तोंद, कि यू आर द रोल मॉडल फॉर ऑल ऑफ अस फ्रॉम द मीडिया एंड वी एज ए डॉक्टर शुड नॉट हैव तोंद। और हम ही तोंद लगा बैठे हैं तो कैसे रहेंगे? मेरे ख्याल से हम तीनों में किसी के तोंद नहीं है, वी आर फॉर्चुनेट। ये नहीं होना चाहिए। दिस इज द मोस्ट पावरफुल प्रोटेक्टर ऑफ हार्ट अटैक्स। एंड वी सी ओवरवेट। अब लोग कहते हैं बीएमआई क्या होता है? बीएमआई बहुत सिंपल है कि जो भी हमारा बॉडी वेट होती है केजी में और डिवाइडेड बाय हाइट इन मीटर्स को स्क्वायर कर दो। अगर 18 से 24 है तो नॉर्मल है, नॉर्मल है। और जहाँ अगर 24 से ऊपर हुआ तो उसको हम कहते हैं ओवरवेट, और अगर 30 से ऊपर हुआ तो उसे हम कहते हैं ग्रेड 1 ओबेसिटी। 35 तक, 35 से 40 ग्रेड 2 ओबेसिटी, और जो 40 से हो गया ऊपर वो मॉर्बिड ओबेसिटी। तो आंसर इलियल बाईपास नहीं है, आंसर बेरेटिक सर्जरी नहीं है। हमको कंट्रोल करना है शुरू से ही कि हम बेरेटिक सर्जरी के शिकार ना। सो आई थिंक दिस इज पॉसिबल बाय मशीन लाइक दिस। देन डोंट गेन वेट, देयर इज अ चेक ऑन योर वेट, check on your visceral fat, check on your predisposition for heart attack, brain attack. तो this चीज mindset change होगा और sensitize होगा, और सबसे बड़ी चीज awareness होगी। This is my own data published in 2007 in Indian Heart Journal, जिसमें मैंने दिखाया है कि हॉस्पिटल कम्युनिटी में 40 और 60 की उम्र में 65% लोगों को ओबेसिटी है। That means 2 out of 3 persons are obese. And mostly common in women as compared to men. Percentage difference is only 5 to 7%, but pretty common. This is the data. See the data here. 86% people have central obesity, and 78% were hypertensive. This data has been published, accepted in PubMed. This is the data. See the world data. Metabolic syndrome in India, पूरा red है, मतलब brown है पूरा. हर जगह है metabolic syndrome इंडिया के अंदर. You can see here metabolic syndrome worldwide, and see the components of metabolic syndrome. Type 2 diabetes होती है, उससे cardiovascular disease होती है, high triglycerides, high bad fat, good cholesterol is less, bad cholesterol is high, sugar is high, inflammatory markers are high, और central obesity होता है। ये सारे component हैं। हमने सारी स्टडी करी। जो नेक्स्ट फेज में हमारी स्टडी थी, हमने CRP मेजर किया। सबका CRP हाई था, इंटरल्यूकिन हाई हो जाते हैं, प्रोथ्रोम्बोटिक होते हैं। अब न्यू वी आर द कोविड इरा। कोविड वायरस वैसे ही प्रोथ्रोम्बोटिक, प्रो इन्फ्लेमेटरी है, प्रो इम्यूनोजेनिक है। एंड इफ यू हैव मेटाबॉलिक सिंड्रोम ऑन द टॉप ऑफ इट, वी आर एट अ वेरी हाई रिस्क दैट। सो वी शुड बी वेरी केयरफुल कि हमें ओबीस तो होना ही नहीं, क्योंकि पहले ही वायरस जो है वो ठीक नहीं है, तो वी शुड वर्क ऑन इट। ये बड़ी इंपॉर्टेंट स्लाइड है, जिसमें मैंने काफी मेहनत करी है बनाने में, जस्ट टू प्लीज सुदीप। आई वर्क रियली हार्ड फॉर दिस। हमने ये दिखाया है एरेटिक कंजम्पशन। अगर हम जो फास्ट फूड खाते हैं तो हमारा इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है, हाइपरटेंशन, बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, और इन्फ्लेमेशन हो जाता है, क्लॉट बनना शुरू हो जाता है, और वो कोरोनरी आर्टरीज में, और जो आर्टरीज हमारी हार्ट से ब्लड ब्रेन में लेके जाती है, कैरोटिड आर्टरीज में, सेरेब्रल आर्टरीज में, और ऑर्टा में, सब में डिजीज पैदा कर देती है। उसे हम कहते हैं एंडोथेलियल फंक्शन, और ये सीवीडी हो जाता है। तो दिस स्लाइड गिव्स द होल स्पेक्ट्रम कि बीमारी कहाँ शुरू होती है। लैक ऑफ एक्सरसाइज, ईटिंग द रॉन्ग फूड एट द रॉन्ग टाइम, एट द रॉन्ग प्लेस, इन द रॉन्ग मैनर, इन द रॉन्ग डोज, इन द रॉन्ग एनवायरनमेंट, एंड टॉक्सिक इमोशंस मेक्स अस अ टॉक्सिक बीइंग। सो वी मस्ट नॉट बिकम like a emotional time bombs of malnutrition and obesity, which can burst anytime. This is the fundamental which I wanted to say. मेल के अंदर कभी भी 90 सेंटीमीटर से ज़्यादा ओबेसिटी नहीं होना चाहिए। सेंट्रल हमारी तोंद की जो साइज है 90 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए आदमियों में, और 80 सेंटीमीटर से ज़्यादा फीमेल में नहीं होना चाहिए। अगर ये ज़्यादा है
तो हमारी रिस्क हार्ट की प्रॉब्लम की ज़्यादा है। ये देखिए पुलिस में पंजाब सीधे तो क्या है बताओ, क्या बताया अभी देखिए, साउथ में देखिए आप क्या खा रहे हैं खाना, साउथ में देखिए एक्सरसाइज नहीं करना, स्मोक करना, ड्रिंक करना, वी आर लीडिंग ए वेरी फॉल्टी लाइफस्टाइल। अब ये देखिए फीमेल के अंदर वेदर पियर शेप और एबल शेप से सेम, नाम अलग अलग है, पियर शेप एंड एबल शेप, बट सो फार एज द प्रोपेंसिटी इज कंसर्न वो बहुत हाई है। ये देखिए फर्मिंगम हार्ट स्टडी पूरे वर्ल्ड का डेटा है टू शो द पावर। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड फ्रॉम यूसुफ सलीम हु इज अ वेरी पावरफुल मैन इन कनाडा, और इंडिया का डेटा जो पब्लिश हुआ है फ्यू डेज बैक, 79% ऑफ इंडियंस हैव एटलीस्ट वन लिपिड एब्नॉर्मलिटी, फैट एब्नॉर्मलिटी। वही तो बात कर रहा है इस मशीन की। थैंक्स टू डॉक्टर गोयल फॉर थिंकिंग ऑन दिस लाइन्स कि 79% के अंदर वन फैट एब्नॉर्मलिटी है ही, और सेंट्रल ओबेसिटी इन इंडियंस इज 50 to 60%। एंड ये सारे 9 फैक्टर हैं विच कॉज प्रीमेच्योर हार्ट अटैक। सबसे ज्यादा 50%, उसके बाद में साइकोसोशल और स्मोकिंग है, फिर हाइपरटेंशन है, और फिर ओबेसिटी है, और उसके बाद फिर डायबिटीज है। See this data. This is the world data to show कि हम सब, आप और मैं, are living as global map of disability adjusted life. हमें किसी को ब्लड प्रेशर है, किसी को डायबिटीज है, कोई स्मोकर है, ब्रोंकाइटिस है, तो वी आर ऑल लीडिंग ए लाइफ ऑफ मान डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ। इसे कहते हैं डेली डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ। सब दवाइयाँ दे रहा है, तो हमारे पास सब दवाइयों की जरूरत नहीं होना चाहिए। अगर दवाइयों की जरूरत है भी तो टाइमली इंटरवेंशन होनी चाहिए। सी द डेटा हियर, हाइपरटेंशन, मेटाबॉलिक सिंड्रोम, 25 साल का डेटा है वर्ल्ड का, सबसे बड़ा कॉज मेटाबॉलिज्म। एंड सी द डेटा हियर कि डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ इज नॉट ओनली इन इंडिया बट इन द होल वर्ल्ड, मेटाबॉलिज्म प्लेज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। ये पब्लिश हुआ है डेटा 188 कंट्रीज में, लेंसेट में पब्लिश हुआ है, और ये भी डेटा वही है कि मेटाबॉलिज्म इज वेरी इंपॉर्टेंट। या हार्ट फेलियर, अब आज लोग कहते हैं हार्ट अटैक और हार्ट फेलियर में क्या फर्क है। हार्ट फेलियर मतलब ये है कि जो हमारा हार्ट पंप करना कम कर देता है, या हार्ट का पंपिंग एक्शन कम हो जाए, उसे हम कहते हैं हार्ट फेलियर। ये 2 टाइप का होता है, सिस्टोलिक हार्ट फेलियर, डायस्टोलिक हार्ट फेलियर। डायस्टोलिक मतलब हार्ट रिलैक्स नहीं करता है, और सिस्टोलिक मतलब पंप नहीं करता है, और ये सब चीजें ओबेसिटी में होती है। अगर ओबेसिटी बचेगी तो हमें हार्ट फेलियर नहीं होगा। व्हाई शुड वी पुट डिवाइसेस, why should you put artificial L bed and R bed and heart transplant? करोड़ों का खर्चा आता है उसमें। अगर हम ओबेसिटी को बचा लें तो कई करोड़ों को बचा लेंगे। इसकी डेटा है, एंड आई डोंट वांट टू गो द डिटेल्स। ये सारा डेटा है, दिस इज जस्ट टू शो कि वॉल्यूम ओवरलोड कैसे हो जाता है। दिस इज जस्ट टू शो अगेन, फर्स्ट इज मेटाबॉलिक सिंड्रोम, सेकंड इज मेटाबॉलिक सिंड्रोम, थर्ड इज मेटाबॉलिक सिंड्रोम। तो सबसे बड़ा कारण, ये स्लाइड पुरानी है मेरी बहुत, दिख रही नहीं आपको, बड़ी ओल्ड स्लाइड है कि मेटाबॉलिक सिंड्रोम इज द मेन फैक्टर। ये हमारा पब्लिश डेटा है इंडियन हार्ट जर्नल में, कि हमने दिखाया कि जिन लोगों को मेटाबॉलिक सिंड्रोम होता है उनका पूरा ब्लड वेसल का स्ट्रक्चर रीमॉडल्ड हो जाता है। दिस इज द डेटा, आई वोंट पुट डिटेल्स। एलवी मास बढ़ जाता है और हार्ट बिल्कुल स्टिफ हो जाता है। ये मैंने बताया था सीआरपी के बारे में। दिस इज माय ओन ग्रेडिंग इन द वर्ल्ड व्हिच इज कंसीडर्ड ऑल ओवर। कि HSCRP कैसे बढ़ता है, उसका लेवल क्या है, डिपेंड्स ऑन द मेटाबॉलिक सिंड्रोम। डायबिटीज देखिए, 10% लोगों को डायबिटीज हो रही है। अब ये देखिए आप, प्रेवलेंस ऑफ डायबिटीज इन इंडिया, भरा हुआ इंडिया डायबिटीज, दैट इज व्हाट वी कॉल एज वर्ल्ड कैपिटल ऑफ डायबिटीज। एंड सी हियर द बर्डन एट अ ग्लांस, 10%, और बढ़ते चले जा रहा है। डायबिटीज बढ़ते जा रही है, मेटाबॉलिक सिंड्रोम बढ़ता जा रहा है, क्योंकि प्रिवेंटिव स्ट्रेटेजी को हम नहीं अपना रहे हैं। हार्ट वेलनेस इज द नीड ऑफ द आवर। Preventive cardiology is the only mantra which will work in India. We are not so rich, we are not so developed that we can come back, everybody and make so many hospitals and produce all kind of morbidities and mortalities. अब ये देखिए आप, एडल्ट पॉपुलेशन में इंडिया का प्रेवलेंस ऑफ डायबिटीज इज वेरी हाई, डे बाय डे मॉर्टेलिटी बढ़ती जा रही है। आई वोंट गो टू द इरेगुलर पल्स, उसका भी संबंध मेटाबॉलिक सिंड्रोम में है। ये मैंने मेयो क्लिनिक से स्लाइड निकाली है, इसमें लिखा है कि अगर हम ओबेसिटी का एपिडेमिक प्रिवेंट कर दें, कम कर दें ओबेसिटी, तो डायबिटीज 2600 लोगों में कम हो जाएगी। अमेजिंग। हार्ट अटैक, ब्रेन अटैक
360% लोगों का कम हो जाएगा। ये डेटा मेयो क्लिनिक का है, मेरा नहीं है डेटा ये। सो हाई ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा, डेथ्स कम हो जाएंगी, गॉल ब्लैडर स्टोन कम हो जाएंगे, इवन कैंसर कम हो जाएगा और नी रिप्लेसमेंट कम हो जाएगा। कितनी चीजें कम हो जाएंगी अगर हम एक मेटाबॉलिज्म को चेक करें। ये तो डॉक्टर गोयल की थिंकिंग है, पता नहीं अमेरिका छोड़ के क्यों आए, ये सोच से आए हैं कि भाई कुछ भारत के लिए किया जाए, अच्छी चीज। ये देखिए आप डेटा कितना है, हमारे पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज इतनी बढ़ जाती है। टोबैको एक सेक्टर फैक्टर है, वी ऑल नो our population is suffering from excessive alcohol consumption also and insufficient physical activity. Physical activity is very important. I'm 71 years of age. I go for a walk for 40 minutes every day in Lodhivara before going to the hospital. I've got my secretary sitting with me. He is a proof. He also accompanied me. I love that. That is the best time of my life. And that's how I'm very productive. And I work for 16 hours a day. Oil intake बहुत जरूरी है। ये मैंने एक सीन बनाया एयर पॉल्यूशन। हम विशियस एटमॉस्फेयर में रह रहे हैं, हमारा एनवायरनमेंट बाहर का ठीक नहीं है, कम से कम अंदर का एनवायरनमेंट तो ठीक करें जो हमारे हाथ में। एयर पॉल्यूशन इज ऑन द टॉप। यू सी हियर, ये हमने एक मैप निकाला है, स्टेट वाइज फूड मैप। फूड मैप देखिए आप, पंजाब में क्या खाते हैं, कहीं जलेबी खा रहे हैं, हरियाणा में कहीं डोसा खा रहे हैं, कहीं पोहा खा रहे हैं, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में जलेबी चल रही है। ये तो ठोस चीज है, ये खाना थोड़ी है। वी आर एब्यूजिंग अवर बॉडी। हम लोग क्या कर रहे हैं, हमको कुछ समझ नहीं आ रहा है। वी आर सी द मैप, ये मेरा नहीं मैप बना, मैंने निकाला है वेबसाइट से, पूरा स्टेट वाइज फूड मैप ऑफ इंडिया। हम किस तरफ जा रहे हैं कुछ पता नहीं है। केरला का भी है, सबका है, गुजरात का भी लिखा हुआ है। वो कहते हैं खाखरा, खाखरा इज रिटन हियर। फिर मैंने खिचड़ी मैप निकाला, खिचड़ी कैसे खिचड़ी खाई जाती है, कहाँ खाई जाती है और किस प्रकार की खाई जाती है। See this, and this is the world map of omega 3. इंडिया में omega 3 0 है, इसी कारण इन्फ्लेमेशन ज्यादा है। सिंपल सी चीज है, वो करना चाहिए। जिसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड ज्यादा है, उसका कंजम्पशन होना चाहिए, वो हम लेते नहीं है। EPA या DHA, बहुत स्टडी हो रही है पूरे वर्ल्ड में। The guy is so fat with central obesity, still he is not living Pepsi Cola or Coca-Cola. See this, तो ये जरूरी है कि विजिबल फैट कम करना बहुत जरूरी है। That is the trigger for our problems. And see this, one of my patients, उसका सिर्फ मैंने विजिबल फैट कम किया है, इसको 14 दवाइयाँ चल रही थी। विजिबल फैट कम करने से 0 दवाई खाई। ये फरीदाबाद से आता है पेशेंट, ये लाइव है, इज लाइव, इज वेरी यंग। एट द एज ऑफ 32, 14 मेडिसिन्स, टुडे इज ऑन 0 मेडिसिन। इनको आप जानते हैं इसी तरह, अदनान सामी, व्हाट ही वाज and what he is now, just by fat reduction। एडिपोज टिश्यू कम किया है, फैट। ये देखिए आप, on one side we are having mushrooming of McDonald, on the other side we are mushrooming angioplasty and stenting in bypass surgery। Where are we going? We need to change our mindset. Mindset has to change। ये देखिए आप, स्कूलों में नहीं छोड़ा बच्चों को भी, को फ्रेंड्स क्लास करा जा रहा है, पेरेंट्स आर टू बिजी। You see the lady, she can't walk, she can't get up, and she is falling victim to so-called visceral fat toxicity। Everywhere is visceral fat। So इसमें क्या होगा, बीमारी होगी। ये देखिए आप, इतना visceral fat बढ़ा हुआ है कि अपने कुत्ते को ट्रेडमिल करा रहे हैं। आपको ट्रेडमिल नहीं कर सकते, कुत्ते को ट्रेडमिल करा। ये देखा गया है कि यूके में स्टडी हुई थी, ये पाया है कि जो ड्राइवर होते हैं उनका visceral fat बहुत ज्यादा है, लेकिन जो कंडक्टर होता है, बस कंडक्टर, वो फिट है। वेरी ऑब्वियस मैसेज क्लियर। सिमिलरली स्टडी करी थी पोस्टमैन और पोस्टमास्टर। पोस्टमैन में फैटी नहीं, पोस्टमास्टर में फैटी फैटर। वेरी सिंपल स्टडी, यहाँ की नहीं है, यूरोप की स्टडी। सो मैसेज वेरी क्लियर कि अगर हम एक्सरसाइज करेंगे, मूव करेंगे, खाने में कंट्रोल रखेंगे तो ठीक होंगे। ये देखिए आप क्या हो रहा है, सेंट्रल ओबेसिटी एपिडेमिक है, इट इज कम एपिडेमिक। तो बीमारी को तो यहाँ पकड़ना है, ना कि जब हार्ट उठाया उसके एंजियोप्लास्टी करनी। आई एम टेलिंग एज अ डॉक्टर, my practice is more than 44 years and I am very well trained in the United States. Anything you can ask me in cardiology and medicine, I am here to reply. I am sure Dr. Rawat is also here. Anytime, anything you want, we are here to reply to it. We don't leave our dogs also. कुत्तों को खिला रहे हैं आइसक्रीम, उनको आर्थराइटिस हो जाती है, कैटरेक्ट हो जाता है, they can't walk and they die by the time they are 11 years or 12 years. So we are producing toxicity everywhere
we need to change our mindset. Vitamin D3 deficiency, the Chinese expression है, inferior doctors treat the disease, mediocre doctors treat the disease before it is evident, but superior doctors prevent the disease. Please prevent, restrict salt, control hypertension, alcohol, exercise. Please take care of your visceral fat right in time before it becomes a volcano. And we should do it right now. To conclude, ladies and gentlemen, I must say today, India is the world capital of obesity, visceral fat obesity, hypertension, stroke, reduce hypertension, heart attack by the year 2025. That's a target. Focus equally on primary and secondary prevention. We must launch a smart heart app. I'm sure with the help of Swadeep and Dr. Goel, we must launch an app. Maybe we can launch an app on visceral fat control and use a combo of India Health Link, Health Pod. इतनी awareness होनी चाहिए health pod की कि हमारा pod पूरे world में famous हो जाए. And then you must have an advanced lab and heart wellness centers everywhere, as I already mentioned to you. IHL Health Pod with 20 parameters or even more, it should act like an ATM. मैं डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में एक लेक्चर दे रहा था उनके टेलीविजन. उन्होंने ये बात करी थी मेरे से, ये एटीएम से आप प्रभावित हैं? मैंने कहा बहुत ज़्यादा. अगर ये एटीएम को फॉलो करेंगे तो हमारे यहाँ बहुत लोगों को तकलीफ नहीं होगी. एनहांस वेलनेस क्वेश्चन. तो समबडी आज में ये वेलनेस क्वेश्चन क्या होता है? बहुत सिंपल है. आप जब भी घर में रहते हैं या किसी कम्युनिटी में रहते हैं, उसके वेलनेस पैरामीटर निकाल लीजिए नंबर, और 100 लोग हैं, कितने लोगों का वेलनेस पैरामीटर फिट, उसका स्कोरिंग कर दीजिए. स्कोर 1, 2, 3 थी, वो स्कोरिंग क्वेश्चन हो गया. So we should enhance our wellness quotient. That's the need of them. What is the take-home message? The message is, ladies and gentlemen, we need your help. With folded hands, we need your support. Health of millions is at stake of youth in India. We have our children, we have our grandchildren, and we feel very sad and sorry when they lose their life in 40s, when they are not even grown properly. A time has come, we must focus on visceral fat reduction. And we have the best technology today to show us the results. So it is not like a illiterate approach, a very literate approach, technical approach, which is measurable. Control obesity, reduce visceral fat, prevent hypertension, diabetes and stroke, and optimization of nutrition. We can optimize your diet. I was discussing with our journalist friend from Statesville. The time has come every 3 months. Why not? I should check my weight. I check my blood pressure every day. Every day I check my blood pressure in the morning. So why I should not check every 3 months where I am going? So that I can live at least till the age of 80. After 80 I have to also go. We are not immortal. But why early? What is their hurry? We can't cross the bridge before we reach there. So at least we should understand what are we doing and where are we going. We should act vocally as we are doing today. Focally and impact globally. I'm sure we have the media person like Swadeep, and you all will help us to take this message in the globe. That is the only way. And I remember the words of our Prime Minister Modi, who once said, inform, perform, reform, and transform the whole world with preventive strategies and no visceral fat. That's a very important message. Ladies and gentlemen, preventive cardiology is the only solution for Indians. The thoughts that I think, the words that I speak, the actions that I perform, the stresses that I face, the temper that I lose, the morsel of food that I eat, the water that I drink, the air that I breathe, the emotions that I experience, and the environment that I live in get metabolized by 60 trillion cells, 6 trillion chemical reactions, 60 neuropeptides, 60,000 of miles of blood vessels, and 6 billion capillaries, and become you and me. Please measure your activities so that we all remain healthy. Without media, we cannot achieve our goal. We need your help so that
we sensitize and enhance awareness on the health.